हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है फील्ड, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फील्ड क्या होता है। ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड ए फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज ए यूनिट। दैट मीन्स इस रिंग के अंदर सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। And in other word, a set F with two binary operation, addition and multiplication, is called a field if it satisfies the following axiom, which is F is an abelian group under addition and F minus 0 is an abelian group under multiplication and F satisfy distributive law। क्योंकि यहाँ पर देखो F अगर addition में abelian group होगा तो ये जो है रिंग का फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर f जो है ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट f माइनस जीरो कैन बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर f माइनस जीरो अगर ये अबेलियन ग्रुप होगा तो यहाँ पर ये f जो है सेटिस्फाई करेगा क्लोजर एंड एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ f यहाँ पर रिंग होगा। सिंस f माइनस जीरो इज एन अबेलियन ग्रुप तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा एंड f यहाँ पर कम्यूटेटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स f यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। सिंस f माइनस जीरो इज एन अबेलियन ग्रुप तो यहाँ पर f माइनस जीरो में सब एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स f में इस नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो हियर f इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। सो हियर f जो है फील्ड होगा अगर ये तीनों एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल द रैशनल नंबर सेट q इज ए फील्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें पता है Q जो होता है ये कम्यूटेटिव रिंग होता है विथ यूनिटी वन एंड यहाँ पर ईच नॉन जीरो एलिमेंट A बिलोंग्स टू Q। तो यहाँ पर A का जो इनवर्स होता है ये होता है 1/A, क्योंकि A इंटू 1/A इक्वल टू 1। सो हियर 1/A इज ए रैशनल नंबर, सो दिस इज बिलोंग्स टू Q। तो यहाँ पर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू Q, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ये Q के अंदर एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई Q इज ए फील्ड। Similarly, real number set R is a field and complex number set C is a field. But the integer set Z is not a field. क्योंकि हमें पता है Z जो होता है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, बट इसके अंदर सिर्फ 1 एंड -1 यूनिट एलिमेंट होते हैं, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इन Z ये होता है 1/A which is a rational number which is not belongs to Z। सिंस Z में सारे एलिमेंट यूनिट नहीं होते, दैट्स व्हाई Z इज नॉट ए फील्ड। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। टू शो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो हमें पता है जो इंटीग्रल डोमेन होता है इट्स ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड हैज नो जीरो डिविजर। ये जो फील्ड होता है इट्स ऑलरेडी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सो हियर टू शो दैट इट्स ए इंटीग्रल डोमेन, तो वी हैव टू ओनली शो दैट देयर इज नो जीरो डिविजर इन दिस फील्ड। सो हियर लेट F इज ए फील्ड and let arbitrarily choose A and B belongs to F. So here if AB equal to 0 for A not equal to 0, तो यहाँ पर F जो है field है, that means every non-zero element is a unity. So here A is non-zero, that means A inverse belongs to this field. So here I can write it as A inverse into AB equal to A inverse into 0. So this is implies A inverse into A into B equal to 0, क्योंकि A inverse into 0 equal to 0, that implies यहाँ पर A inverse into A जो है this is equal to 1 into B equal to 0, that implies B equal to 0. Since A and B is arbitrary, so there is no zero divisor in this field. So every field is an integral domain. Next in theorem number 2, a finite integral domain is a field. To prove this, let D be a finite integral domain. Since D is a integral domain, then D is a commutative ring with a unity 1 and has no zero divisor. To show that D is a field, we have to show that every element in D is a unit element. That means every element has multiplicative inverse in this D. So here let arbitrarily assume A belongs to D. So here in case 1, if A equal to 1,
then A is its own inverse. So here multiplicative inverse is exist. And in case 2, let assume A not equal to 1 and A belongs to D. So here consider a sequence A square, A cube, A to the power 4, A to the power I, and these are belongs to D. क्योंकि integral power of an element belongs to D. And since the sequence is infinite but the set is finite, that means for different index I and j, there must be A to the power I equal to A to the power j. So here let I greater than j. If we multiply A to the power minus j in both sides, we get A to the power I into A to the power minus j equal to A to the power j into A to the power minus j. This implies A to the power I minus j equal to A to the power 0, which is equal to 1 by definition of integral power. So here A to the power I minus j equal to 1. And since here A not equal to 1 and I greater than j, so here I minus j greater than 1. So that implies I minus j minus 1 greater than 0. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A to the power I minus j equal to 1 into A to the power I minus j. So this is equal to, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A into A inverse into A to the power I minus j. So this is equal to A into A to the power I minus j minus 1. So here A into A to the power I minus j minus 1 equal to A to the power I minus j. And here A to the power I minus j equal to 1. So here A into A to the power I minus j minus 1 equal to 1. That means here A to the power I minus j minus 1 is the inverse of A. Hence A is a unit. Since A is arbitrary, every element in D is a unit. Therefore, a finite integral domain D is a field. Next in corollary, for every prime P, ZP is a field. तो यहाँ पर हमें पता है for P is prime, ZP जो होता है ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है एंड यहाँ पर ZP जो है फाइनाइट है. So by this theorem, finite integral domain is a field. That's why ZP is a field. नेक्स्ट जो है इसके ऊर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 1, सो दैट Zn इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम. फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम हमें पता है इफ n इज प्राइम दैट इंप्लाइज Zn इज ए फील्ड. बट कॉन्वर्सली लेट assume Zn इज ए फील्ड. So here we have to show that n is prime. So here let assume n is not prime. Since n is not prime, we can write it as n equal to n1 into n2, where n1 and n2 is greater than 1 and less than n. Then in Zn, operation is integer modulo n. So here we can write n1 into n2 is congruent to n, which is congruent to 0 mod n. And यहाँ पर n2 is congruent to n2 mod n. क्योंकि यहाँ पर n2 जो है लेस देन n है. सो हियर वी कैन राइट इट एज 1 इंटू n2 mod n. एंड 1 को हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं n1 इनवर्स इंटू n1 इंटू n2 mod n. एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू n1 इनवर्स इंटू n1 इंटू n2 mod n. Since n1 into n2 congruent to 0 mod n, so this is congruent to n1 inverse into 0 mod n. So this is equal to 0 mod n. So here n2 equal to 0 in Zn, but here n2 is greater than 1. So here is a contradiction. So here n must be prime. Next जो है in problem number 2, so that the ring Q of root 2 is a field which elements are of type a plus b root 2 where a and b belongs to the rational number set Q. तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है ये जो Q of root 2 है ये रिंग है. अगर आप चाहे तो भी टेस्ट कर सकते हैं. ये जो सेट Q of root 2 है ये रिंग का सारा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. एंड टू शो दैट दिस रिंग इज ए फील्ड, we have to show that this is a commutative ring with a unity and every non-zero element is a unit. That means there exists inverse of every non-zero element. So here Q of root 2 is a ring. Then arbitrarily take a plus b root 2 and c plus d root 2 which is belongs to this Q of root 2 where a, b, c and d belongs to Q. So यहाँ पर a plus b root 2 into c plus d root 2 जो होगा this is equal to a into c plus a into d root 2 plus b into c root 2 plus b root 2 into d root 2 which is equal to 2bd,
which is equal to AC plus 2BD plus AD plus BC रूट 2। तो यहाँ पर देखो A, B, C, D belongs to Q and Q is a commutative ring. So these elements are satisfy commutative property. So here we can write A into C as a C into A plus 2 into BD as a 2 into D into B plus A into D as a D into A plus B into C as a C into B root 2. Again by splitting this we get this is equal to C plus D root 2 into A plus B root 2. So here A plus B root 2 into C plus D root 2 equal to C plus D root 2 into A plus B root 2. So here Q of root 2 is a commutative ring. And here we can write 1 equal to 1 plus 0 root 2. So here 1 and 0 belongs to Q. So this is belongs to Q of root 2. So here multiplicative identity belongs to Q of root 2. So this set Q of root 2 is a commutative ring with unity. Next check every element in this Q of root 2 is a unit. तो यहाँ पर let arbitrarily ले लेते हैं A plus B root 2 belongs to this set Q of root 2 where A plus B root 2 not equal to 0. That means A not equal to 0 and B not equal to 0. तो यहाँ पर A plus B root 2 का जो inverse होगा this is equal to 1 by A plus B root 2 using rationalization process. तो अगर यहाँ पर हम a माइनस बी रूट 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी रूट 2 इंटू a माइनस बी रूट 2. सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी रूट 2 का स्क्वायर जो होगा 2b स्क्वायर. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ पर देखो a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 दैट्स इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. So here a divided by a square minus 2b square is belongs to Q rational number and minus b divided by a square minus 2b square this is also belongs to Q. So here this element is belongs to the set Q of root 2. That means for any non-zero element a plus b root 2 belongs to Q of root 2. Their inverse also belongs to this Q of root 2. So every element is unit in this Q of root 2. So here Q of root 2 is a commutative ring with unity and every non-zero element is unit. So here Q of root 2 is a field. I hope ये जो field का concept है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना.